Bismillahirrahmanirrahim. Welcome all the viewers and the exam aspirants. Today we will discuss about one of the easiest template on how to take a history of small for gestation age fetus from a pregnant woman. So this is one of the easiest most template. In the start, always ask about the biodata. The risk factors for the small for gestation age fetus includes in age if more than and equal to 35 years, which is a risk factor for the SGA baby. Primary gravida or nulliparity is another risk factor for the SGA. It asks about the LMP whether the patient is sure of dates or unsure or having a mistaken dates. So in the biodata, these of the components are important to dig out the history related to SGA. So the patient can be admitted for the fetal-maternal monitoring either due to growth disparity on the scan report, on any Doppler report, any oligohydramnios on the scan, any history of chronic PV leaking, which is pre-prom, any fetal anomaly. So these are the representing complaints by which patient can be admitted either through the emergency or OPD. In the history of presenting illness, inquire about when it was diagnosed and how it was diagnosed, whether it was told by a doctor and then confirmed by a scan report, sorry, or either by a Doppler report. So in the trimester-wise history, you will have to rule out all the risk factors for the small for gestation age, as well as to make the differential and the cause of the SGA fetus in that particular pregnant woman. In the first trimester, inquire about whether the pregnancy was planned or unplanned, whether it has been conceived through IVF, which is also a minor risk factor for small for gestational age, whether her dating scan was done if the patient is unsure of dates. Also ask about twins because it is also one of the risk factors for the SGA and the different growth disparities. To rule out torch, ask about any history of fever, flu, rash, or any pets, specifically cats at home. Any history of drug intakes, for instance, NSAIDs and the painkillers causing the oligohydramnios and IUGR. Any history of PV bleeding to rule out threatened miscarriage as recurrent PV bleeding is a risk factor for the SGA. Any history of PV leaking. In the second trimester, inquire about whether anomaly scan has been done or not, its findings, whether it was normal, any poly or oligohydramnios stated on that scan, any IUGR impression on that scan, or any Doppler. Then inquire about the recurrent history of antepartum hemorrhage and pre-prom by asking about any history of PV bleeding or PV leaking, both in the second and the third trimester. Inquire about the preeclampsia and hypertension diabetes in the second and third trimester. In the third trimester, inquire about regular growth scans or any Doppler done and what were the findings if the patient know about it. Then inquire whether the fetal movement is satisfactory to the mother or not. And then again, the recurrent antepartum hemorrhage and the pre-prom. In the obstetric history, inquire about the previous history of intrauterine growth restriction, previous history of small for gestational age fetus, and a previous history of low birth weight, because these all are the risk factors for the SGA in the successive pregnancy, and a history of stillbirth or intrauterine death, and history of previous history of preeclampsia or short interpregnancy interval of less than 6 months is also a risk factor for SGA. In the gynae history, inquire about the mode of contraception. In the past history, the maternal problems and the comorbidities leading to SGA includes diabetes, chronic hypertension, any autoimmune disease, inquire about any joint pains, fever, rash, alopecia, anemia by ruling out SLE and APLA. To ask about chronic kidney disease or hyperthyroidism. In the drug history, inquire about the NSAIDs if it has been taken during the pregnancy. In the family history,
Inquire about any history of congenital anomalies and maternal and paternal SGA if the patient remembers, because this is also one of the major risk factors for SGA. In the personal history, inquire about the dietary habits, the nutritional status of the woman, whether low food intake during pregnancy or vigorous exercise, any history of smoking, alcohol, and cocaine abuse. Then comes the socioeconomic history. So this is the easiest most template on how to dig out and delve the history of small for gestation age. So let's reproduce it in the local Urdu language to be easily asked by the patient. In the biodata, आपने पूछना आपकी उम्र कितनी है, because more than 30 and equal to 35 years is a risk factor for SGA. अगर पहला बच्चा है, it is also a risk factor. क्या आपने पेशेंट से पूछना है कि आपकी माहवारी की आखिरी तारीख क्या है, और उसके बाद उनसे पूछना है कि आपको अपनी माहवारी की तारीख कंफर्म याद है कि नहीं। फिर पेशेंट दाखिल होगी, वो कह सकती हैं कि मुझे डॉक्टर ने दाखिल किया है बच्चे की हरकत के लिए, क्योंकि अल्ट्रासाउंड के ऊपर बच्चा दिनों के लिहाज से या हफ्तों के लिहाज से छोटा आया हुआ है, बच्चे का पानी कम है, या मुझे मुसलसल पानी पड़ रहा था, या बच्चा abnormal है, या फिर एक और चीज कि मुझे ब्लड प्रेशर का मसला था जिसकी वजह से बच्चा छोटा हो आ रहा है अल्ट्रासाउंड के ऊपर। फिर हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंटिंग इलनेस में आपने पेशेंट से पूछना है कि कैसे कब पता चला कि बच्चा छोटा है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि पेशेंट उन्हीं टाइम पे दाखिल हो जिन टाइम पे पता चला। हो सकता है पहले से छोटा आ रहा हो और अब डॉपलर भी खराब हो गया हो, जिसको रंगीन अल्ट्रासाउंड कहते हैं, इस वजह से पेशेंट को दाखिल किया जाए या तो डिलीवरी के लिए या फिर मॉनिटरिंग के लिए। और कैसे पता चला था, क्या डॉक्टर ने मुआयने पर बताया था, अल्ट्रासाउंड हुआ था, या फिर डॉक्टर को रंगीन अल्ट्रासाउंड कहते हैं। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आपने पूछना है कि हमल प्लान था, अनप्लान खुद ही हो गया, या कोई जो हमल के कुदरती तरीके होते हैं उसके करीब आईवीएफ होता है उससे करवाया था। क्या आपने हमल के शुरू में अल्ट्रासाउंड करवाया था, अगर आपको तारीख याद नहीं थी? क्या डॉक्टर ने जुड़वा बच्चे बताए थे अल्ट्रासाउंड के ऊपर? हमल के शुरू के 3 महीनों में बुखार, नजला, जुकाम, जिस्म पे धब्बे, या फिर घर में कोई पालतू बिल्लियां मौजूद तो नहीं है? आपने दर्द के लिए कोई गोली खाई हो लंबे अरसे के लिए, या फिर हमल के शुरू के 3 महीनों में आपको पानी या खून पड़ता हो? Then in the second and third trimester, inquire about कि क्या बच्चे for the anomaly scan, inquire about क्या बच्चे के पैदाइशी नकाइज चेक करवाने के लिए अल्ट्रासाउंड करवाया था? क्या वो अल्ट्रासाउंड नॉर्मल डॉक्टर ने बताया था, उसके ऊपर बच्चे का पानी ठीक था, बच्चे की ग्रोथ या निशोनमा कम तो नहीं बताई थी, थोड़ी तो नहीं बताई थी? फिर आपने पूछना है कि आपको हमल के 3 महीने के बाद अलावा में कोई पानी पड़ता हो, खून पड़ता हो? फिर ऑप्स हिस्ट्री, उसके बाद थर्ड सेमेस्टर में और सेकंड में अगेन के आपको शुगर ब्लड प्रेशर का मसला, सर में दर्द का मसला, आंखों के आगे अंधेरा आ जाता हो, पेट में दर्द होती हो, या आपके टेस्ट कोई खराब हुए हो ब्लड प्रेशर के। तो दिस इज हाउ यू विल रूल आउट द प्रीक्लेम्शिया, एक रिकरेंट एंटीपार्टम हेमरेज फ्री फ्रॉम एंड डॉपलर फाइंडिंग्स। फिर क्या आपको फॉर द फीटल मूवमेंट आस्क अबाउट कि क्या आपको बच्चे की हरकत ठीक महसूस होती है? इन द ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री आपने पूछना है क्या क्या पिछले बच्चे की दफा या पिछले बच्चों की दफा भी यही मसला आया था? क्या बच्चे छोटे थे, या बच्चे जब पैदा हुआ था तो उसका वजन कम था या 2.5 किलो से कम था? क्या पहले कोई बच्चा फौत तो नहीं हुआ आपका, या पिछले हमल में आपको ब्लड प्रेशर का मसला होता हो जिस वजह से आप दाखिल रही हो और वक्त से पहले डिलीवरी की गई हो? या 2 बच्चों में वक्फा कम तो नहीं है फॉर द शॉर्ट इंटर प्रेगनेंसी इंटरवल? इन द गायनी हिस्ट्री आपने पूछना है कि मनसूबाबंदी के लिए क्या इस्तेमाल करती रही हैं? इन द पास्ट हिस्ट्री टू रूल आउट द रिस्क फैक्टर्स फॉर द एसजीएम, इंक्वायर क्या आपको शुगर, ब्लड प्रेशर, जोड़ों में दर्द का मसला, या सर के बाल गिरते हों, खून की कमी का मसला जिसमें कि धब्बे पड़ते हों, टू रूल आउट ऑटोइम्यून फॉर द क्रॉनिक किडनी डिजीज। आपने पूछना है कि आपको गुर्दों में कोई मसला तो नहीं है? हाइपरथायरॉयडिज्म के लिए क्या दिल का मसला तो नहीं है, दिल की धड़कन तेज महसूस होती है, गर्मी बहुत ज्यादा लगती है? इन द ड्रग हिस्ट्री अगेन यू कैन आस्क अबाउट कि अगर इफ यू हैव नॉट आस्क्ड प्रीवियसली
कि क्या आपने दर्द की गोली लंबे अरसे के लिए तो नहीं इस्तेमाल की थी। इन द फैमिली हिस्ट्री आपने पूछना है कि क्या आपके खानदान में कोई मूर्छी बीमारी चली आ रही हो, या फिर आपके खामन जब पैदा हुए तब उनकी ग्रोथ कम थी, या वजन कम था, या बच्चा छोटा बताया था। अगर आपको याद हो तो प्लीज बता दें। इन द पर्सनल हिस्ट्री आपने पूछना है कि क्या आप खुराक में क्या इस्तेमाल करती हैं, क्या आपने बाकायदा फल इस्तेमाल करती हैं कि नहीं, क्या आप एथलीट तो नहीं है, बहुत ज्यादा वर्जिश तो नहीं करती, माजरत के साथ सिगरेट नोशी, तंबाकू, अल्कोहल या कोई और पान गुटखा या कोई और नशा व अद्वियात का इस्तेमाल तो नहीं करती। So this is how you will take the history from a pregnant woman related to rule out the risk factor and the differentials for small for gestational age fetus. These are the risk factors stated by the RCOG guidelines, which includes age more than or equal to 35 years is a minor risk factor. However, more than 40 is a major risk factor. Then nulliparity, BMI, as already mentioned, less than 20 and more than 25 is also a risk factor. And conception by IVF, vigorous exercise, nutrition, low food intake, the history of torch infection, maternal substance exposure, which includes smoking, alcohol, previous history of SGA intrauterine death, previous preeclampsia or short interpregnancy interval, any maternal and paternal SGA, hypertension, diabetes, renal disease, autoimmune disease, antepartum hemorrhage, recurrent or placental abruption, and current preeclampsia in this pregnancy, Down syndrome markers done in this pregnancy and nutritional status. So for more the history templates, do subscribe the channel. Good luck and thank you.